Hi everyone, S4 Sharanya Science Classes welcomes you all. Today we are going to discuss about human immune system. It's a very important topic of class 12. So let's have a look. Human immune system. What do you mean by immune system? Obviously we all know that immune system is something which actually helping us to prevent from all the type of diseases and all, right? So it is a system that gives immunity to our body, and it's actually how they are doing. It's actually doing by recognizing, responding and remembering foreign antigens. So these antigens, first we have to understand what you mean by antigens. Antigens are the foreign particles, right? So which will cause immune response in our body. So such particles we can simply name it as antigen. जो हमारा बॉडी में इम्यून रिस्पॉन्स कोज करने वाले कोई सा भी पार्टिकल को हम एंटीजन बता सकते हैं. इट कैन बी ए पोलन ग्रेन, इट कैन बी ए डस्ट और इट कैन बी ए माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, एनीथिंग. वो ऑर्गेनिजम्स के अगेंस्ट हमारा बॉडी एक्चुअली एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करती है, और इन आवर बॉडी देयर आर सो मेनी मैकेनिज्म्स, राइट? वो एंटीजन को रिकॉग्नाइज करना और उसके खिलाफ रिस्पॉन्ड करना और उसको रिमेंबर करके रखना. दैट मीन्स नेक्स्ट टाइम वो आने तक, राइट? सो दैट ना इफ द सेम इन्फेक्शन हमारे बॉडी में अगेन आ गया तब उसको दैट ना तुरंत रिकॉग्नाइज करना. तो देयर मस्ट बी ए रिमेंबरिंग सिस्टम, राइट? सो दीज ऑल आर एक्चुअली डन बाय आवर इम्यून सिस्टम, राइट? सो इट इज द सिस्टम दैट गिव्स अस इम्यूनिटी. सिंपली हम वो बता सकते हैं इम्यून सिस्टम इज द सिस्टम विच एक्चुअली गिविंग इम्यूनिटी टू द ह्यूमन बॉडी. So how it is giving? It's actually recognizing, responding and remembering the foreign antigen, right? By all these methods they are actually giving that immunity to us, right? So human immune system plays a very important role in allergic reactions, autoimmune diseases and for organ transplantation also. These all things we will go and discuss, then you will understand very clearly, right? So what you mean by allergic reaction? You can see that allergic responses are there, right? Autoimmune disorders, that means actually in our own body की response की वजह से कुछ immune कुछ diseases आ जाती है, उसका autoimmune disease बताएंगे. We will discuss in detail in this chapter itself. Next, organ transplantation में भी immune system की बहुत important role है. These all points we will discuss in this chapter, right? So today we are going to discuss about mainly the immune system के लिए सबसे important organs कौन सी है, right? So what are the organs which is included in the immune system, and all these things we are going to discuss, right? So immune system include lymphoid organs. You can see that, right? Lymphoid organs are there, and you can see that different type of tissue cells are there, and some antibodies are also there. All these together we can say that that's actually they are the part of the immune system, right? So let's come to that the main organs of the immune system. That's called primarily lymphoid organs. First you have to understand what you mean by that, right? Lymphoid organs are organs which is actually made up of lymph tissue, right? So lymph tissue से बना हुआ organ को हम बताते हैं lymphoid organ, right? So these are the organs where the origin, maturation and proliferation of lymphocytes occur. As we all know, class 11 we have already learned that what are the different types of lymphocyte and what is their role. Obviously the WBC, right? So the white blood cells, right? Or that you can see that the leukocytes, right? So these are very important in that immune mechanism. They are the soldiers of our body, right? So you can see that among this the immune response actually produced by the antibodies actually produced by the lymphocytes. There are different type of WBC. If you haven't gone through that, please go through that in class 11 topic. You will understand that. I have already done that video. You can check that in my channel itself, and you can understand what are the different types of lymphocytes. Then you will have a clear idea, right? So these are the organs which now we are going to talking about the lymphoid organ. Lymphoid organ जो organ है where the origin, maturation and proliferation of lymphocyte take place. Proliferation के मतलब क्या है? Proliferation के मतलब the increase in number of cells. तो ये एरिया है जो lymphoid organ है, हमारा organ जिसके अंदर हमारे lymphocytes, right? हमारा immune response में सबसे important काम करने वाला cell, right? Which is a type of WBC, right? इसका origin और उसके बाद उसको maturation करना और उसके बाद उसका number increase करना, right? That's called proliferation. ये सारे चीज
दटना टेक पार्ट होती है, राइट. सो ये सारे दटना दिस ऑल प्रोसेसेस एक्चुअली टेकिंग इनसाइड द लिम्फॉइड ऑर्गन्स, राइट. सो we can simply say that the lymphocytes are getting ready in the lymphoid organ. That's actually the meaning, right. So you can see that what is actually, how many types of lymphoid organs are there? There are actually mainly two types of lymphoid organs. Primary lymphoid organ and the secondary lymphoid organ. Primary lymphoid organ के मतलब इतना ही है where the WBC formation take place. So here the lymphoid, हमने already बता दिया था, lymphocytes are that lymphoid organs are where the lymphocytes are getting ready, right. So they are actually get ready होती है lymphoid organ के अंदर, right. उधर फॉर्मेशन WBC की फॉर्मेशन प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन्स में होती है और उसके बाद पैथोजन की किल करना, राइट. ऑल दिस एक्टिविटी देयर एक्टिवेशन होने के बाद की जो एक्टिविटीज होती है वो टेक प्लेस होती है हमारे सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन. So we will have a look into that in detail. So what are the primary lymphoid organ? Right. So हमने already बता दिया था. These are the organs where the lymphocytes are matured and differentiated to antigen sensitive cells. So that means WBC की formation होती है और that means actually हमारा lymphocyte, it's a type of WBC, right? So उसका formation, उसका maturation and उसको differentiate करती है antigen sensitive lymphocytes. Antigen sensitive means वो antigen sensitive बनाना पड़ेगा, देन ओनली दे कैन बी वर्किंग. द वर्किंग लिम्फोसाइट्स की वर्क जो बोल रही है उसको एंटीजन को सेंसिटिव, एंटीजन को दटना सेंस करना, उसके हिसाब से एंटीबॉडी वगैरह प्रोड्यूस करना है, देन ओनली दैट विल बी वर्किंग. सो एंटीजन सेंसिटिव लिम्फोसाइट तक उसको मैच्योरेशन करना, उसका डिफरेंशिएट प्रॉपरली करना, दिस वाज एक्चुअली टेकिंग प्लेस इन द प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन. उसका दो एग्जाम्पल्स है हमारा बोन मैरो एंड थाइमस, राइट. सो यू कैन सी दैट दिस आर द बोन मैरो, राइट. सो बोन मैरो के अंदर यू कैन सी दैट हमारा दटना रेड मैरो एंड येलो मैरो इज दैट बोन मैरो, राइट, वेयर द ब्लड सेल्स आर फॉर्मिंग, राइट. उसके बाद उसका मैच्योरेशन डिफरेंशिएटेड, देन दे विल बिकम द एंटीजन सेंसिटिव ब्लड, राइट. सो वन इज दैट हमने प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन में बोन मैरो बता दिया था, सेकंड इज एक्चुअली द थाइमस, राइट. सो वी विल हैव अ लुक इनटू दैट. फर्स्ट द बोन मैरो, राइट. सो यू कैन सी दैट the site of formation of all the blood cells, which you can see that in which the B lymphocytes and T lymphocytes दोनों include होती है, right. So B cells and T cells बोलती है हम, right. B lymphocytes and T lymphocytes, right. So these all type of lymphocytes की blood cells की formation जो होती है वो bone marrow को अंदर है, right. So here you can see that there in the picture we have shown the bone marrow, right, and the section also they have, you can very clearly see that, right. Now the second type of primary lymphoid organ जो है वो है हमारा थाइमस. Thymus actually you can see that it's a bilobed organ है, seen near to the heart and actually beneath the breastbone. हमारे breastbone की that ना just sternum, right, breastbone or the sternum, right, उसका बिल्कुल beneath में नीचे you can see that there will be a what will say a bilobed organ, right. It's actually you can see that bilobed organ है जो हमारा ये वाला right. So the bilobed organ you can see that which is called as that actually thymus gland, right. इसका specialty जो बोल रही है इट्स विल बी वेरी लार्ज, मोस्टली लार्ज ड्यूरिंग द दैट ना टाइम ऑफ बर्थ, राइट. जब भी पैदा होती है उसी टाइम ये बहुत बड़ा होती है, देन धीरे धीरे ग्रेजुअली ये रिड्यूस हो जाती है, उसका साइज बहुत कम हो जाती है एंड आइदर वेरी वेरी स्मॉल होते हैं जब प्यूबर्टी अटेन होती है. सो दैट टाइम इट विल बिकम रियली रिड्यूस्ड, राइट. सो इधर क्या होती है एक्चुअली यू कैन सी दैट ये इमेच्योर लिम्फोसाइट्स है जो फॉर्मेशन हुआ है बोन मैरो में वो जाकर, राइट. सो दैट ना ये थाइमस में माइग्रेट करके जाती है, फिर इधर उसका मैच्योरेशन होती है, राइट. सो दैट्स व्हाई द लिम्फोसाइट्स आर कॉल्ड टी लिम्फोसाइट्स, थाइमस लिम्फोसाइट्स जो बोल रही है. सो दैट्स एक्चुअली बिकॉज ऑफ दैट क्योंकि उसका मैच्योरेशन जो थाइमस ग्लैंड में होती है. सो दैट्स व्हाई टी लिम्फोसाइट्स उसका नाम आ जाती है. I hope it is clear. So these two are included in the primary lymphoid organs. Now we are going to the secondary lymphoid organ. हमने ऑलरेडी बता दिया था lymphoid organs की फॉर्मेशन, मैच्योरेशन और उसका एंटीजन सेंसिटिव बनाना, वो था प्राइमरी lymphoid organ की काम. अभी जो हमारा दटना
व्हाट से एंटीजेंस वगैरह है वो सब कुछ अलग अलग पार्ट से हमारे बॉडी पार्ट से जाती है। तो देयर आर सम सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन्स आर, उसके अंदर ये एंटीजेंस वगैरह आ जाती है, उसको एक्चुअली दैट मीन किल करना, राइट। सो उसका एक्शन उधर होती है, ये लिम्फोसाइट्स की एक्शन, राइट। सो दे आर एक्चुअली उधर से इफेक्टेड सेल्स हो जाती है, राइट। सो दिस इज एक्चुअली वी कैन से दैट दीज आर द साइट ऑफ लिम्फोसाइट फॉर एंटीजन अटैक। वो एंटीजन अटैक करने के लिए की साइट जो है वो है हमारा सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन्स, राइट। सो द ऑर्गन्स टू विच matured lymphocytes migrate and from the primary lymphoid organs, उसके बाद वो एंटीजन के साथ इंटरैक्ट करेगा एंड अगेन इट विल बी प्रोलिफरेटेड टू बिकम इफेक्टर सेल, फिर उसका एक्शन सेल्स इफेक्टर सेल्स हो जाएगा, राइट। सो मेन एग्जांपल्स ऑफ हमारा सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन है जो स्प्लीन एंड लिम्फ नोड्स, राइट। सो हमने ऑलरेडी बता दिया था दिस इज द साइट ऑफ लिम्फोसाइट्स फॉर देयर एंटीजन अटैक, राइट। सो ये जो साइट्स है स्प्लीन, यू कैन सी दैट, राइट। लिम्फॉइड ऑर्गन, लिम्फ नोड्स आर देयर। सो इधर हमारा लिम्फॉइड ऑर्गन्स डायरेक्ट फेस टू फेस आ जाती है एंटीजन की एंड दे विल अटैक ऑन दैट, दे विल टेक देयर एक्शन इन दैट सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन। सो वन बाय वन वी विल गो इन डिटेल। सो सम ऑफ द एग्जाम्पल हमने बोला था स्प्लीन, लिम्फॉइड लिम्फ नोड्स है, इसके अलावा भी बहुत सारी सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन्स है सच एज टॉन्सिल्स, पेयर्स, पैचेस वगैरह। वन बाय वन वी विल गो इन डिटेल, राइट। सो हियर यू कैन सी दैट नॉट ऑल वी आर गोइंग टू डिस्कस हियर इन डिटेल बट सम ऑफ दम, राइट। सो ये यू कैन सी दैट दिस इज एक्चुअली हमारा नॉर्मल टॉन्सिल जो है, ये दिस पार्ट इज एक्चुअली द टॉन्सिल, राइट, विच इज ए सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन, राइट। जब भी इसको कोई भी बैक्टीरियल इन्फेक्शंस वगैरह आ जाती है इट विल बी हैविंग द swelling. Maybe most of the students among you have infected these which tonsillitis or anything, बहुत ज़्यादा दर्द होती है, right, inflammation की वजह से, right. So this is the area because actually here you can see that हमारा पहले ये एरिया को अटैक कर देती है ना, तो इसलिए उधर एंटीजन हमारे लिम्फोसाइट्स की इंट्रैक्शन हो जाती है, उसकी वजह से उसको किल कर देती है। मोस्ट ऑफ द इफ इन्फेक्शन उतना ज़्यादा नहीं हुआ उधर ही उसको किल कर देती है। सो दिस इज एक्चुअली इन्फ्लेमेटेड टॉन्सिल्स है, राइट। Now some of the details we will go in detail, right. Abhi here we have to learn that I told that there are so many examples of secondary lymphoid organ, right. So among them one is that as spleen है, secondary जो है lymph nodes है, third हमारा tonsil, fourth Peyer's patches, fifth one mucosa associated lymphoid tissue that's actually called marls, and the sixth one that's actually the appendix, right. Spleen actually we are going in detail later. Some of the things simply आपको समझना है वो मैं अभी बता रही हूँ। इसमें से lymph nodes जो है, right, so you have seen this picture, you can see that, right. ये green color में जो दिख रही है ये क्या है, right. So here you can see that this is actually हमारा artery है, blue color में दिख रही है, these are veins, right. So हमारे बॉडी में जब भी artery and veins combine करके कैपिलरी बना जाती है, so that's actually where the tissue exchange, fluid exchange वगैरह होती है। So there will be gaseous exchange होती है, right, nutrients exchange whenever they will enter into the cell। उधर से जो gaseous exchange, nutrient exchange वगैरह होती है, there are some ooze out fluid will be there which is called the tissue fluid, और that means जिसमें RBC के अलावा बाकी सब वो है lymph, right। So ये lymph को वापस हमारे ब्लड में लेकर आना है क्योंकि उसमें बहुत सारे इंपॉर्टेंट चीजेस है। ये सब कुछ आपने 10th में 11th में दैट लर्न किया है, व्हाट यू मीन बाय दैट ना लिम्फ एंड ऑल, हमने दैट ना ब्लड सर्कुलेशन चैप्टर में भी ऑलरेडी लर्न किया है। सो हियर यू कैन सी दैट सी ooze out फ्लूइड को वापस लेने के लिए देयर इज अ सिस्टम व्हिच इज कॉल्ड दैट लिम्फैटिक सिस्टम, राइट। सो ये लिम्फैटिक सिस्टम अलग अलग जगह में कुछ नोड्स बना देती है, दैट मीन्स फाइन लिम्फैटिक वेसल्स ज्वाइन करके छोटा छोटा नोड्स बनाती है, एंड दीज स्मॉल नोड्स एंड ऑल दे ऑल्सो बिकम सम मोर, सो बड़ा नोड्स बनाती है, दैट्स कॉल्ड लिम्फ नोड्स, राइट। सो हियर यू कैन सी दैट दैट्स ऑल्सो ए टाइप ऑफ सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन है। इधर क्या होती है द एंटीजेंस, राइट, सो AG दैट्स कॉल्ड एंटीजन, इट एक्चुअली ट्रैप एंटीजन फ्रॉम दैट एक्चुअली लिम्फ, जो लिम्फ उधर से लिम्फ नोड से जाती है उसी वक्त ये लिम्फ नोड्स में एंटीजन ट्रैप होती है एंड एक्चुअली यू कैन सी दैट उसको उधर से किल कर देती है। सो व्हाटएवर हमारा लिम्फैटिक सिस्टम में लिम्फ दैट ना एक्चुअली फाउंड इन द लिम्फैटिक सिस्टम, जो लिम्फ में एंटीजेंस वगैरह आ जाती है उसको इधर ट्रैप कर कर उसको किल कर देती है। सो इट इज ऑल्सो द साइट ऑफ अटैक, राइट, एक्शन ऑफ दैट लिम्फोसाइट्स, राइट। नेक्स्ट जो है हमारा टॉन्सिल, हमने ऑलरेडी बता दिया था, इट्स एक्चुअली सॉफ्ट टिश्यू लंप है, राइट। सो हियर ऑल्सो यू कैन सी दैट इट विल ऑल्सो ट्रैप द जर्म, राइट, फ्रॉम द इनहेलेटेड एयर। हम जो एयर इनहेल कर देती है उसमें जो जो जर्म्स होती है उसको ट्रैप कर देती है, उसकी वजह से द टॉन्सिल कैन बी इन्फ्लेमेटेड, राइट, उधर से फिर उसको किल कर देती है उधर ही, राइट।
Now all the other parts we can discuss here. The vermiform appendix also you can see that this is actually the appendix part. हमारे large intestine की एक projection we can see that it's a vestigial organ actually. Vestigial organ since in olden times it was really used in other organism for cellulose digestion and all, but in human being उसका cellulose digestion नहीं है. It's actually a secondary lymphoid organ where the that ना lymphocytes की that ना interaction with antigen होती है और उसका बाकी it will be converted into the effector cell. So that's also a very important secondary lymphoid organ, right? Some of them we will go in detail. One of the secondary lymphoid organ we are going to learn here, that's actually the spleen, right? Spleen, you can see that in the picture itself you can easily see that, which will be situated right upper left part of the abdomen. हमारा abdomen है right, उसमें stomach की just ऊपर upper left part में you can see that there is a kidney shaped or bean shaped organ है और small organ right जिसका नाम है spleen, right? Spleen की क्या है actually, it contain large amount of lymphocytes and phagocytes. उधर बहुत ज़्यादा amount of lymphocytes भी है और phagocytes भी है right. इसका main role जो बता रही है it's actually that now worn out RBC जो उसका functioning almost finish हो गया और actually microorganisms को उसको सब कुछ remove करने वाला area है हमारा spleen right. इसकी वजह से हमारा spleen को ऐसे भी बोलती है it is actually the graveyard of RBC right, graveyard of RBC because RBC की life cycle complete हो गया, that will be buried inside the spleen, it will be removed at RBC, so it's a graveyard of RBC भी बोलती है right. Fetus में actually when it is in that infant when the womb mother's womb में वो fetus की form में होती है human being, that time this can even act as that reservoirs of erythrocytes or the RBC right. And you can see that ये actually एक filter की जैसा act करती है right, जिसमें से So next type of lymphoid organ we are going to discuss here, that's actually lymph nodes right. Lymph nodes are it's actually part of the lymphatic system itself. I already told you in the first session, that means in the starting, lymph nodes are actually the lymphatic vessel जो join कर बहुत सारे lymphatic vessel join कर एक बड़ा सा lymph nodes बनाती है right. So lymph nodes area जो area है it is having the capacity to trap the microorganisms or their antigen जो बोल रही है it can be a microorganism और उसका कोई भी proteins भी can act as an antigen, उसको trap कर देती है right. So and वो उसकी वजह से lymphocytes वगैरह activate हो जाती है and it will produce the immune response. So जो हमारा lymphatic lymph में जो antigens वगैरह present होती है उसको kill करने के लिए एक area है हमारा lymphatic nodes or lymph nodes we are telling, and whether it will be kill that completely or it can even produce immune response in our body right. Next type of what we say secondary lymphoid organ we have to learn about that Peyer's patches right. Peyer's patches is nothing but it's a patch of tissue which can be found in the small intestine. Small intestine की especially ileum area में you can find this Peyer's patches right. इसका जो role जो बता रहे इसका function जो है हमारे फूड में कोई सभी माइक्रोब्स वगैरह पैथोजेंस वगैरह पहुंच गई इन स्मॉल इंटेस्टाइन उसको किल कर देती है राइट. सो इट्स एक्चुअली प्रिवेंट द ग्रोथ ऑफ द पैथोजन इन द स्मॉल इंटेस्टाइनल एरिया राइट. सो आई हैव ऑलरेडी शो यू द पिक्चर, आई विल शो यू वंस अगेन. यस, दिस इज एक्चुअली द पेयर्स पैचेस. यू कैन सी दैट एज अ पैच ऑफ टिश्यूज राइट. सो पैच ऑफ टिश्यू है जो हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन की है जिसमें एक्चुअली हम बताते हैं पेयर्स पैचेस है विच इज एक्चुअली प्रिवेंटिंग राइट. यू कैन सी दैट द ग्रोथ ऑफ पैथोजन इन द स्मॉल इंटेस्टाइनल रीजन right. So next type of secondary lymphoid organ we are going to learn about here, that's actually हमारा malt है which is simply that full form, that's expanded form we can say that mucosa associated lymphoid tissue. In short we will say that malt right, mucosa associated lymphoid tissue right. So where can you find this right? ये क्या है, ये malt क्या है, where can you find it? It's actually located in the lining of respiratory, digestive and urogenital tract. देख लो आप लोग, ये respiratory हमारा एयर पैसेज द ओपनिंग राइट, नोज इज एक्चुअली ओपनिंग इनटू दैट हमारा रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, देन इनटू द लंग्स. फूड की ओपनिंग जो है माउथ, इट विल बी लास्ट इनटू द डाइजेस्टिव सिस्टम. फिर यूरोजेनिशियल ट्रैक्ट नेक्स्ट ओपनिंग इन आवर बॉडी. तो किधर भी हमारा ओपनिंग्स होती है उसी एरिया में देयर इज अ हाई चांसेस ऑफ एंटरिंग ऑफ दैट पैथोजेंस और माइक्रोऑर्गेनिजम्स वगैरह. उसी एरिया में यू कैन सी दैट दिस इम्यून टिश्यू
that you can see that, which is called mucosal associated lymphoid tissue. Most हमारा पूरा lymphoid tissue की 50% ऐसे टाइप की टिश्यू है. You can see that, right? So here intestine की पार्ट उन्होंने दिखा दिया था. So ये है उसका mucosa, right? That outer layer, the mucosal membrane है, right? इसके अंदर you can see that there is actually a small lymphatic follicles, you can see that, which is called that mucosal associated lymphatic tissue, right? जिसकी वजह से जो पैथोजन हमारे इसमें आ जाती है उसको दैट ना फूड और यूरिन दैट ना यूरिनरी ट्रैक्ट की वजह से और रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट की वजह से हमारे बॉडी में कोई पैथोजेंस और एंटीजेंस आ जाती है, उसको किल कर देती है. सो दीज आर एक्चुअली रेस्पॉन्सिबल फॉर आवर 50% ऑफ आवर lymphoid tissue. So here we have discussed all about that lymphoid organs, which is a part of our immune system. I hope you understand the video properly. If you like the video, please subscribe my channel and share with your friends also. Thank you for watching. Thank you.